Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Voice is clear? Okay. Today we are going to complete cell wall synthesis inhibitor. Yesterday we have discussed the classification of penicillin and classification of antimicrobial drugs, their antibacterial spectrum uses, and we were on adverse effect. We were discussing adverse effect of penicillin. I am fine and hope all of you will be fine. Okay, so come to the adverse effect of penicillin. As I told you that adverse effect are divided into 3 or 4 headings. Number 1 for antibiotics, especially for cell wall synthesis inhibitors. Number 1, hypersensitivity reaction. Okay, hypersensitivity reaction, because cell wall synthesis inhibitors and sulfonamide is very known for hypersensitivity reaction. So you can write down hypersensitivity reaction from minor to major. Okay, from normal rash to anaphylactic shock, different angioedema, urticaria, etc. Then we have this group of drug can be given by oral route, so there may be a GI upset. All antibiotics that can be given by oral route can causes the GI irritation and may cause nausea, vomiting, diarrhea, जो आपके सारे adverse effect होते हैं. ठीक है? Then it can also be given by parenteral route, so they may cause phlebitis or thrombophlebitis, any infection at the site of injection or inflammation at the site of injection. Very simple. And then it also, this group also include the extended spectrum. Extended spectrum means they may causes the secondary infection. They may cause secondary infection or super infection, and these infections are caused by the killing of normal flora in our body. Okay? Super infection and secondary infection occur because of the damage of the normal flora or our normal army. And most common super infections are the fungal infection, candidal infection. Okay? Candida albicans, that causes the vaginal candidiasis. So these are the general toxicities that can occur with all cell wall synthesis inhibitors. Okay, with all cell wall synthesis inhibitors. So now we will discuss one by one. Hypersensitivity reaction, as I told you, anaphylactic reaction, rash, fever, urticaria, pruritus, angioneurotic edema, etc. And to control the hypersensitivity reaction, what measures you have to be taken when you give the parenteral administration of this drug? The protocol for administration of parenteral antibiotic is, first you have to give the test dose intradermally, very small amount, and then observe, and if there is no reaction, no redness, no edema, no itching, then you can give the whole dose of antibiotic. But you must have, what drugs you must have at that time? कौन सी ड्रग्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए जब आप पैरेंटल इंजेक्शन देंगे? No one knows about it. Epinephrine, good. Epinephrine, corticosteroids, ठीक है, ये ड्रग्स आपके पास होनी चाहिए इन हैंड कि अगर पेशेंट को डेवलप होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या सीवियर रिएक्शन, तो आप उसमें पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकें. ठीक है, अदरवाइज माइनर रिएक्शंस में तो आपको कोई इमरजेंसी नहीं होती और इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीहिस्टामिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. Then the separate adverse effect, that is specifically with ampicillin and amoxicillin, if these two antibiotics will use in a viral infection, then they may cause maculopapular rash. Okay? Maculopapular rash, that is non-allergic skin reaction. It is not allergic like hypersensitivity. It is non-allergic reaction
maculopapular rash, and it is specifically occur with ampicillin and amoxicillin. Then GI upset, nausea, vomiting, diarrhea if it is given by the oral route. Phlebitis and thrombophlebitis, especially if it is used by parenteral route, there may be a chances of inflammation of the blood vessels. Pseudomembranous colitis is inflammation of the intestine that is caused by Clostridium difficile. That is caused by Clostridium difficile, and ampicillin may cause this type of inflammation, pseudomembranous colitis, and presentation of pseudomembranous colitis is severe diarrhea. And the drug that is used for the treatment of pseudomembranous colitis, first line is metronidazole, and if patient is hypersensitive to metronidazole or having any problem with that drug, then you can use vancomycin. Metronidazole can be used by oral route, simple drug, flagyl, while vancomycin is parenteral. It is not used by the oral route. Secondary infection can occur like vaginal candidiasis. Okay. Then these are the few specific adverse effects that can occur with specific antibiotics. For example, hepatitis can occur with oxacillin. ये आपने रट्टे लगाने हैं और आपने याद करने हैं because इसके लिए और कोई तरीका नहीं है. ये आपके MCQs में आ सकते हैं. ठीक है. Interstitial nephritis with methicillin and nefcillin. Interstitial nephritis या renal toxicity can occur with methicillin and nefcillin, and the impairment of platelet aggregation can occur with penicillin G or piperacillin or ticarcillin, that is anti-pseudomonal penicillin. While blood disorders like hemolytic anemia, eosinophilia and vasculitis, they are very rare and can occur with any of penicillin. Okay? So we have hypersensitivity reaction number 1, we have GI disturbance, we have inflammation at injection site, we have superinfections, then we have specific like hepatitis with oxacillin, interstitial nephritis with methicillin or nefcillin, impairment of platelet aggregation with penicillin G or anti-pseudomonal penicillin. This is allergic rash. Okay. Then mechanism of resistance. For penicillin, as you know, for all antibiotics, we have only 4 mechanisms of resistance, and it is not very difficult to remember. Number 1, simply there is a modification of the target protein or the receptor. There is a destroying enzyme. The organism may produce destroying enzyme. Or number 3, impaired penetration. Drug will not enter into the microorganism and do not reaches to the target site, so it may cause resistance. Then efflux pump. Inactivation of antibiotic by the specific enzyme. This is not only for the penicillin, but this is a very common mechanism of resistance of even protein synthesis inhibitors or many other antibiotics. The microorganism releases different types of enzyme that causes the destruction of that particular antibiotic. In case of penicillin, we have beta-lactamases or penicillinase enzyme that is commonly produced by the Staphylococci, E. coli, and H. influenza. And it is the common cause of resistance against these antibiotics. Then modification of target. The target for penicillin and cephalosporin is penicillin binding protein or transpeptidase enzyme. And this type of modification or this type of resistance occur in methicillin. आपको पता है ना methicillin के ऊपर एक वो नाम है MRSA, methicillin resistant staphylococci, because methicillin is belongs to the group that is used for penicillinase resistant penicillin organism, penicillinase resistant staphylococci. But there are different types of enzymes, and some organism may produce the beta-lactamases that is not sensitive to methicillin. So those organisms called methicillin resistant Staphylococcus aureus, and
The resistance occur against methicillin because of modification of target protein. Modification of target protein. These above two mechanisms usually common in gram-positive, and the presence of efflux pump and impaired penetration. As you all know that gram-negative microorganism requires specific type of porine channels. If there is a deep down regulation of these protein channels or the difference in their structure of protein channels, then the drug will not enter into the microorganism, or sometimes they have efflux pump that send the antibiotic back to the microorganism. So these are the four common mechanism of resistance. In case of SEQs, you can write it down all four mechanism. अगर आपको enlist करने के लिए कहा है, explain करने के लिए कहा है, तो you can write it down few words related to this these mechanisms. ठीक है? This is a pictorial presentation of these four mechanisms. We have explained in the last lecture. Now, can you answer me for this question? Which of the following penicillin is more nephrotoxic? Which of the following penicillin is more quick beta? आप लोग आज we have to complete the whole topic. ठीक है? Methicillin is a nephrotoxic. ठीक है? Methicillin and nephcillin both are the nephrotoxic drugs. Good. Second, which of the following beta-lactam antibiotic is resistant to beta-lactamase? ठीक है? Which of the following beta-lactam antibiotics is resistant to beta-lactamases? But a nephrotoxic है. Methicillin is a nephrotoxic. It can cause interstitial nephritis. ठीक है? Okay. The correct answer of this question is good. आने शुरू हुए हैं क्लोक्सासिलीन. ठीक है? क्लोक्सासिलीन. Correct answer is cloxacillin. An elderly debilitated patient has a fever due to an infection. He has extensive skin lesions, scraping of which reveal the presence of large number of gram-positive cocci. The most appropriate drug to use for treatment of this patient is. Must remember, the staphylococci is the most common organism that causes the skin lesion. Skin and soft tissue infections are most commonly caused by gram-positive cocci, especially staphylococci. Okay, staphylococci. So which answer is correct? Good. Nephcillin. Nephcillin. If the causative organism is a staphylococci, then the drug of choice will be anti-staphylococcal penicillin. In case of, if the options are from penicillin or cell wall synthesis inhibitors. Okay. So nephcillin is a correct answer. Good. Okay, now we come to the another group of cell wall synthesis inhibitor, that is cephalosporins. Cephalosporins have a same beta-lactam ring in their structure, so it belongs to the beta-lactam antibiotics, but there is a difference in their side chains. In case of penicillins, they have only one side chain. While in cephalosporins, they have two side chains. Two side chains, and the nucleus of cephalosporin is called 7-amino cephalosporinic acid. जैसे उसको 6-amino penicilloic acid हम कह रहे थे ना, कि जो उसका न्यूक्लियस था पेनिसिलिन का, तो इसके न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? ये जो दो रिंग्स हैं, थायाजोलाडीन रिंग एंड बीटा-लैक्टम रिंग, उनको हम कहेंगे 7-amino cephalosporic acid. Cephalosporin is widely used nowadays for the treatment of various types of infection, including skin and soft tissue infection, respiratory tract infection, intra-abdominal infection, bone infection, etc. It has a long list of drugs. It has two side chains, so iski jo drugs hain, as you all know, the drugs are prepared by
modification in the structure. So side chain की modification से we have a long list of cephalosporins. Penicillin की निस्बत drugs इस group में ज़्यादा हैं, and cephalosporins are classified according to their generations into 5 generations. ठीक है, 4 generations are commonly, now 5th generation is also introduced. कुछ books में लिखा हुआ है, कुछ में नहीं लिखा हुआ, but you can add it. कि cephalosporins की 5 generations है, sorry. First generation, second generation, third generation and fourth generation. Initially first generation का जो antibacterial spectrum है, that is similar with penicillin G. It is more effective against gram-positive organism as compared to gram-negative. While second generation has more activity against gram-negative organisms as compared to first generation, and it is also sensitive to some penicillinase producing organisms. And second generation is commonly used for the treatment of respiratory tract infection. Commonly used, very commonly used. Third generation has more activity against gram-negative microorganism, and it is more sensitive to beta-lactamase producing microorganism, and this group of drug is also used in meningitis. ठीक है, आपको याद होगा कि penicillins were not used in meningitis because they cannot cross the blood-brain barrier. Here in cephalosporin group, first and second generation, even many drugs from third generation will also not effective in meningitis, but we have 2 drugs from this generation that is used in meningitis. Fourth generation has more a wider spectrum, and it is effective against the resistance organisms. Fifth generation cover both gram-positive and gram-negative, and it is newer drug. So now we come to the drugs. In first generation, we have the classification of cephalosporin is very difficult to remember. It is very, very difficult classification. I will try to give you some hint. और अगर आपके माइंड में भी कोई आ जाए इसके mnemonics वगैरह, तो you can also tell me. So first generation has cefazolin, cephalothene, cephaloridine, cefadroxil, cefalexin and cephradine. ठीक है, cephradine can be used in skin and soft tissue infection, or it can be used from this group. Otherwise, cefazolin is used for surgical prophylaxis and a bone infection. So how you can remember? If you have seen the name of these drugs, all these drugs has cephA or CEPHA, cephA. ठीक है, या तो इनमें जो है cephA है SEFA, ठीक है, cephA, और either they have cephA PHA, ठीक है. So first generation की इसमें क्या है, A है स्पेशली. आप बाकियों में देखोगे तो इसमें सेफ है, A नहीं है. So cephA नहीं है. CEF present in all almost all cephalosporins. So this group has SEPHA as it is written in the cefalexin and cephradine and CEFA. So you can remember by this these words cephA, SEFA cephA, or CEFA cephA and CEPA PHA, sorry, PHA, okay, cephA. So it is specifically, except there are few exceptions. ये जरूरी नहीं है, कोई hard and fast rule नहीं है. हमने अपने ease के लिए इसको किया है. नेट पे मैंने सर्च किया था तो मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं मिला. और भी it is very difficult कि आप उसको first word से बनाओ या last word से बनाओ. So it is very difficult to make the mnemonic for cephalosporins. So it is better कि आप उसको ये देख लो कि जो first generation they are starting from cephA or FA or PHA, cephA, cefazolin, cephalothene, cephaloridine, cefadroxil, cefalexin and cephradine.
ठीक है, इन सब में आ रहा है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि सेकंड जनरेशन में सेफाक्लोर में ये चीज आ रही है, ठीक है, बट इट इज फ्रॉम सेकंड जनरेशन सेफाक्लोर। बाकी सब में किसी में ए नहीं आ रहा। अगर आप देखोगे इस पूरी क्लासिफिकेशन में, तो देयर इज नो ए एंड नो पीएच, ठीक है, पीएच भी किसी में नहीं है और ए भी किसी में नहीं है। सो इट इज स्पेसिफिकली फॉर फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का बनाना जो है काफी डिफिकल्ट है, इसके मुझे नहीं मिले हैं, ठीक है। इसका अगर आपके माइंड में कोई आ रहा है तो मुझे बताओ। तो पहले हम थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव नमूनिक्स फॉर थर्ड जनरेशन। अगर आप थर्ड जनरेशन की ड्रग्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ड्रग्स हैविंग IME एट द एंड, IME, ठीक है, ये देखो IME, सेफेक्जीम, सेफ्टेजिडीम, सेफोटेक्साइम, सेफ्टेजॉक्साइम, ठीक है, सेफपोडोक्साइम, ये भी एग्जाइम है, ठीक है। ऑल दीज ऑलमोस्ट 5 ड्रग्स हैविंग IME एट द एंड, IM, बेटा सेफ जो है ना, सिर्फ इसमें भी आप देखो ना, इसमें भी सेफ है, ठीक है। इफ यू हैव सीन इन almost all and cephalosporins have ceph. You can see here ceph, you can see here ceph, you can see here ceph, ठीक है, इधर भी सेफ है, इधर भी सेफ है। तो सेफ के साथ कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कंटिन्यूएशन में हो। हाँ, सेफो कर सकते हो आप इसमें कि 2 ड्रग्स हैं, सेफोटेटिन एंड सेफॉक्सिटिन, तो ये 2 ड्रग्स आपके साथ आ सकती हैं, ठीक है। इसमें दोनों में ओ है, ठीक है, ओ है इन दोनों में, तो सेफोटेटिन एंड सेफॉक्सिटिन ये दोनों आ सकती हैं। बाकी आप देखोगे कि हर एक का स्ट्रक्चर चेंज है। अगर आर का देखोगे तो आर इन दोनों में, मतलब आर बाकियों में भी है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो स्पेसिफिकली इसके साथ आ रहा है, तो हम इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। सबसे अब आप फर्स्ट जनरेशन के बाद आप लोग थर्ड जनरेशन को देखो कि वी हैव ऑलमोस्ट 5 ड्रग्स दैट हैज IME सफिक्स, IME, सेफेक्जीम, सेफ्टेजिडीम, सेफोटेक्साइम, सेफ्टेजॉक्साइम, सेफोपोडोक्साइम, ठीक है। इन सब में जो है IME है, IME, and few drugs having ONE1, 2 ड्रग्स आप लोग देखोगे ONE1, so these drugs can have a suffix 1, ठीक है। तो आपकी ऑलमोस्ट 6 ड्रग्स तो आपको 7 ड्रग्स तो आपको याद हो गए, सेफेक्जीम, सेफ्टेजिडीम, सेफोटेक्साइम, सेफ्टिजॉक्साइम, वेरी गुड। मुकद्दस ने कहा है कि जिस सेफोटेटिन जो है वो टाइटैनिक से याद करना इजी है। देखो ना, ये आप डिफरेंट माइंड यूज करते हो तो आपको डिफरेंट आइडियाज आते हैं। हाँ बेटा, ये एक ड्रग्स आप टाइटैनिक से याद कर लो कि सेकंड जनरेशन में एक ड्रग है सेफोटेटिन, जो कि जिसको आप टाइटैनिक के रेफरेंस से आप इसको याद कर सकते हो। 2-3 ड्रग्स याद कर लो तो सफिशिएंट है कि आप लोग सेफोरेक्साइम एंड सेफाक्लोर, दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड फ्रॉम सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो और सेफोटेटिन याद कर लो, सेफॉक्सिटिन, 2-4 ड्रग्स अगर आप रट्टे लगाने पड़ेंगे, आप रट्टे लगाओ, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो ये जल्दी भूल भी जाती हैं बहुत। ओके, सो थर्ड जनरेशन में अब हम देख रहे हैं कि हमने IME एंड ONE ये हमने 2 निकाले, बाकी ये आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे, सेफ्टिब्यूटिन एंड सेफडिनार एंड मोक्सेलेक्टम। इसका आप अपना कोई और बनाना चाहते हो तो बना लो, अदरवाइज यू कैन रिमेम्बर बाय IME कि सेफेक्जीम, सेफ्टेजिडीम, सेफ्टेक्साइम, सेफ्टिजॉक्साइम, सेफपोडोक्साइम एंड सॉरी, हाँ, ये जो IME है, this is the one group, and second has a 1 at the end, that's the ceftriaxone and cefoperazone. थर्ड ग्रुप फोर्थ जनरेशन जो है, फोर्थ जनरेशन हैज अ PI, ठीक है। आप अगर आप ये देख ले तो इसमें PI है सेंटर में, ठीक है, PI और इसमें भी जो है वो PI है, दोनों में PI है,
cefepime and cefpirol. Cefpirol and cefepime, वो रेड लाइन लगाने से बाकी भी नजर नहीं आ रहा होता. तो फोर्थ जनरेशन हैव cefepime and cefpirol. Cefepime and cefpirol both have a pi in their center. ठीक है, so you can understand by this. And the fifth generation has ceftibutene. ठीक है, सॉरी मुझे नजर नहीं आ रहा था. अच्छा, ceftibiprole, इसमें रोल है, आप अगर देखोगे तो ROLE. Role is common in both of these drugs. Role, okay, role. Ceftaroline and ceftibipirol. ROLE is common in this. ठीक है, रोल, और इसमें क्या है, PI is common in both of these drugs. So you can remember by this. So first generation has cefazoline, cephalothene, cephradine, cephadroxil, cephalexin and cephaloridine. ठीक है, ये सारी ड्रग्स हैं from first generation. सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा है, आप टाइटेनिक के नाम से याद कर लोगे, सेफोटेटिन, सिफॉक्सिटिन, ये दोनों तो याद हो जाएंगे. दोनों में उसमें टिन है और उसमें टैन है. सिफॉक्सिटिन, सेफोटेटिन, सेफाक्लोर, सेफोरेक्साइम एंड सेफामेटाजोल, सेफप्राजोल. अब इट्स ऑन यू, ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे है कि आप लोग उसको कैसे याद करते हो. ठीक है, बार बार रिपीट करो, एक दूसरे को सुनाओ, डिस्कस करो एक दूसरे के साथ, लिख कर देखें बार बार इसको, फिर आपको ये याद होगा. एंड थर्ड जनरेशन हैव IME एट द एंड, सेफेक्सीम, सेफेटेजिडीन, सेफोटेक्साइम, ceftizooxime, cefpodoxime, and then we have two drugs that end at one, ceftriaxone and cefoperazone. ठीक है, अच्छा, शाजमीन, सेफेलोथीन साउंड्स लाइक थिन पोटैटो. सेफेलोथीन तो वैसे ये, अच्छा हाँ, सेफेलोथीन जो है वो इट इज फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन. ये इट्स ऑन यू, मैंने वही कहा ना कि आपके माइंड में जो चीजें आती हैं, आप जरूरी नहीं कि हर बंदा उसी के साथ उसको याद रख सके. सो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीजों के साथ वो होती है, अट्रैक्शन होती है, या उनको डिफरेंट चीजें याद रहती हैं. जरूरी नहीं है कि हर एक को एक ही स्टाइल में याद रहे. सो दिस इज अ बेसिक गाइडलाइन, यू कैन यूज योर ओन निमोनिक्स. ठीक है, एंड द रिमेनिंग ड्रग्स इन थर्ड जनरेशन आर cefibutin, cefdinar and moxalactam. In fourth generation we have PI in the center, cefepime and cefpirol. While in fifth generation we have role in the center, that is ceftibipirol and ceftaroline and ceftibipirol. These are the fifth generation. Okay, now we come to the next slide. In all these generations, some are oral, can be given by oral route, some are parenteral. ठीक है, and very few drugs can be given by both route, oral or parenteral route. In this slide, only 4 generations are given. Fifth generation is only given by parenteral route, like fourth generation. ठीक है, in first generation, cephalexin, cephradine and cephadroxil. These drugs can be used by oral route, while cephalothene and cefazoline is only available in parenteral preparation. Second generation, cefaclor and ceforexime, both available by the oral preparation, or cefaclor is commonly available with the name of seclor. ठीक है, एंड सेफोरेक्साइम जो है सेफेक्साइम के नाम से अवेलेबल है, और इट इज वेद बोथ ऑफ दीज ड्रग्स आर कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग फ्रॉम mild to moderate infection, especially respiratory tract infection, from cephalosporins. Ceforexime also available by parenteral route, and cefoxitin, cefotatin or other drugs are available by parenteral route.
ठीक है. Cefroxime is only drug that is available in both oral preparation as well as parenteral preparation. Third generation Cefixime, Cefdinar, Ceftibutine, and Ceftamar. These drugs are available by oral route, and Cefotaxime, Ceftazoxime, Ceftriaxone, and Ceftazidime. These drugs are available by parenteral route. ठीक है. Fourth generation and fifth generation is only available by parenteral route. There is some other mnemonics. You can take the picture of this slide. मैंने नेट से ही ली थी. ठीक है. इसमें सेकंड जनरेशन के लिए भी इन्होंने कुछ बताया है mnemonics. फॉक्स फॉर टैनिंग. ठीक है. फॉक्स, सेफोक्सिटिन, फॉर सेफोरेक्साइम. ठीक है. फॉर FOR, सेफाक्लोर, एंड टैन, सेफोटेटिन. सो अगर किसी को ये इजी लगता है याद करना तो मतलब आप इससे भी इसको याद कर सकते हो. ठीक है. थर्ड जनरेशन के लिए उन्होंने थोड़े से डिफरेंट बताए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जो है वो पहले वाले ज्यादा बेहतर थे कि जो आपको बताएं IME और 1 वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके फिक्सेट. ठीक है. फोर्थ जनरेशन के लिए भी वो PI ज्यादा बेहतर था और इसमें ट्रोल था. यू कैन सी ओनली फॉर सेकंड जनरेशन. दिस स्लाइड यू कैन सी ओनली फॉर second generation. Fox for tanning, cefoxitin, ceforexime, cefaclor, and tan is for cefotatin. तो ये आपको याद हो सकता है, ये आप लोग नोट डाउन कर लो. ठीक है. कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन इसको? Have you done it? Okay. Now we come to the antibacterial spectrum. As I told you that first generation has more gram-positive coverage, and it is gradually goes to the gram-negative coverage. आप लोग देख रहे हो कि first generation जो है ज़्यादा इसकी gram-positive coverage है, जो arrow में show की हुई है. Then Cefaclor या second generation has comparatively less and has few gram-negative. थर्ड जनरेशन की और ज्यादा ग्राम नेगेटिव कवरेज है, एंड फोर्थ जनरेशन जो है वो एक्सट्रीमली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स. और जो फिफ्थ जनरेशन है दैट इज इफेक्टिव equally both against both gram positive and gram negative, and this generation is effective against even MRSA, methicillin resistant staphylococci. Methicillin resistant staphylococci. Otherwise, no other cephalosporin is effective against MRSA. ठीक है. स्टेफलोकोकाई को तो वो इनहिबिट कर रही हैं या कवर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट MRSA. जो स्टेफलोकोकाई मिथासिलिन को रेजिस्टेंस है कर रहे हैं उनके अगेंस्ट सेफ्ट्रोलिन दैट इज फिफ्थ जनरेशन इज इफेक्टिव. सो ग्राम जो है वो इट इज द कवरेज to the gram negative is gradually increased with increasing generations. Cephalosporins are resemble to penicillin. It has broad spectrum, and it is comparatively, as compared to penicillins, it is less susceptible to beta lactamases. ये हम बात कर चुके हैं. It has same pharmacokinetic, absorption is key, distribution, excretion. They are also excreted by the kidney. 10% by the glomerular filtration, 90% by the tubular secretion. So all the things are same. So now we come to the antibacterial spectrum of first generation. As I told you, first generation is mainly effective against gram-positive microorganism, especially gram-positive cocci, and few gram-negative rods. Few gram-negative, but has a moderate activity. Moderate activity means कि इसकी जो main activity है that is against gram-positive cocci. तो अगर आपने याद रखना है तो इसको याद रखिए. First generation is effective against gram-positive cocci. अब gram-positive cocci में you have streptococci, staphylococci, pneumococci, ठीक है, and peptococcus और peptostreptococci. This is anaerobic gram-positive cocci. आप इसके लिए कोई नमूने किसका बना सकते हो. S2P2 कर सकते हो इसको, और
और आप देखो कि क्या इसका हो सकता है। ग्राम नेगेटिव जो है वो EPK, इकोलाई, प्रोटियस एंड क्लेप्सिला। यूजुअली जितने भी जो भी ड्रग्स हैं, ज्यादातर जो बेसिक ड्रग्स हैं, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट इकोलाई, प्रोटियस एंड क्लेप्सिला। बाकी जो दीज आर द बेसिक समझ लेंगे ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके अगेंस्ट पेनिसिलिन भी इफेक्टिव थी, जिनके अगेंस्ट सेफलोस्पोरिन्स भी हैं। जो जो फर्दर जनरेशंस हैं, दे कवर other ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो आप इसको याद कर सकते हो, S2P2। ठीक है, 2 S हैं, स्टेप्टोकोकाई और 2 P हैं, न्यूमोकोकाई, पेप्टोकोकाई और पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई। एंड इजीली याद करने के लिए, एक्सेप्ट मिथासिलिन रेजिस्टेंट। रिमेंबर, स्टेफलोकोकाई सेंसिटिव बट एक्सेप्ट MRSA. MRSA is not sensitive to this class. So it is mainly used for the treatment of skin and soft tissue infections. ठीक है, cellulitis and soft tissue abscess. Previously it was used in UTI, but now it is resistant. ये E. coli वगैरह is a main causative organism of UTI. So and it has a moderate activity. Previously it was sensitive, but now it is resistant. Cefalosporin is used for surgical prophylaxis. It can be asked in the MCQs. ठीक है, prophylaxis for surgery. Cefalosporin is used. It can be used in bacteremia. Second generation cephalosporin has small difference in their structure. आप ये देखो कि आपने जो नाम पढ़े थे, cefoxetine, cefotatin, these are the cephamycin derivative. मैं आपको इसलिए important बताना कि it can be asked in MCQs कि which of the following are the cephamycin derivative. Why they are called cephamycin? Because as I told you that cephalosporins has 2 side chain. ठीक है, 2 साइड चेन। इस तरह इसकी एक है, इसकी 2 साइड चेन्स हैं। लेकिन जो नॉर्मल सेफलोस्पोरिन का सबका यही स्ट्रक्चर है, लेकिन जो सेफामाइसिन है, दे हैव अ थर्ड चेन, दे हैव अ थर्ड साइड चेन। दैट्स व्हाई इसको हमने एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया है, एंड इट इज नोन एज सेफामाइसिन डेरिवेटिव। और ये इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं? सेफोक्सेटिन, सेफोटेटिन एंड सेफामेटाजोल। ठीक है, ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि सेफामाइसिन डेरिवेटिव्स क्या हैं और क्यों हैं, बिकॉज इट हैज थर्ड साइड चेन, while all other cephalosporin has only 2 side chains. 2 side chains, इसकी जो है वो 3 side chains है। That's why cefamycin, it is called cefamycin derivative. ठीक है, ओरल और उसका हम बात कर चुके हैं। नाउ come to the antibacterial spectrum. Antibacterial spectrum भी इनका याद करना काफी मुश्किल है। It is antibacterial spectrum is different Klebsiella, penicillin resistant pneumococci, or different drugs are sensitive against a different microorganism. For example, जैसे cefamendol, cefuroxime and cefaclor, they are active against H. influenza. That's why cefuroxime and cefaclor is commonly used for the treatment of respiratory tract infection, because H. influenza is the most common organism that causes the respiratory tract disorders. So they are sensitive to H. influenza, while other drugs of this group like cefoxetine, cefametazole, cefotatin, they are less effective against H. influenza. ठीक है, तो आप इन ड्रग्स का नाम लिखकर इनके सामने लिखोगे दे आर मोर एक्टिव अगेंस्ट H. influenza, और बाकी ड्रग्स नहीं है। Similarly, cefoxetine and cefametazole and cefotatin, they are effective against anaerobic microorganisms as well. Anaerobic, that is Bacteroid fragilis and some Serratia species. ठीक है, some Serratia species, Bacteroids fragilis and some Serratia species. Cefoxetine, cefametazole and cefotatin is effective against this organism and has less activity against H. influenza. Otherwise combined, अगर हम इसका antibacterial spectrum देखेंगे तो they are effective against few gram positive like streptococcus, staphylococcus, streptococcus pyogenes, ठीक है, anaerobic streptococcus that is seen in this slide, gonococci and few gram negative rods, E. coli, H. influenza, Klebsiella, Protease, ये सारे सेम है, ये सारे सेम है, बट आपका डिफरेंस कहाँ है?
मैंने जो डिफरेंस था जस्ट वो लिखा है कि ये these three drugs, ceforexime, cefaclor and cefamandole, they are effective against H influenza mainly, and cefoxitin, cefotetins mainly effective against bacteroid fragilis. Baki, the common antibacterial spectrum is this. Clear? So this group of drug is commonly used in respiratory tract infection, upper and lower sinusitis, otitis media, community acquired pneumonia के लिए ceforexime is a drug of choice. जो cefotetin, the drugs that has activity against anaerobic organisms can be used in abdominal infections, peritonitis, pelvic inflammatory disease, ठीक है, gynecological and biliary tract infections. So they are effective against anaerobic. That's why they are used in peritonitis or all or intra-abdominal condition. Clear? While ceforexime, cefaclor or cefamandole, they are not effective in these conditions. इन conditions में ceforexime और ये चीजें effective नहीं होंगी. Ceforexime, cefaclor is used in these disorders, while the last three drugs are used for intra-abdominal disorders. Third generation has more extensive antibacterial spectrum. Here is the difference is ceftriaxone and ceforexime. Only these two drugs can cross the blood-brain barrier and can be used in meningitis. Ceftriaxone, ये आपने जरूर याद रखनी है drugs के नाम के, which drugs are used to cross the blood-brain barrier or can be used for meningitis, because it can be asked in MCQs or it can be asked in SCQs. Ceftriaxone and ceforexime, ठीक है. T और X, जिन ड्रग्स में T और X है, अब आप ये देख लो कि वन जो है वो एक फर्स्ट ड्रग जो है इसमें वन है एट द एंड और वन सेकंड ड्रग में IM ही है एट द एंड. द कॉमन थिंग इन बोथ ऑफ दीज इज T इसमें कॉमन है, ठीक है, T कॉमन है इसमें, T और X और किसी में कॉमन नहीं है. अब अगर हम देखेंगे T और X ceforexime में भी कॉमन है. चलें खैर किसी और तरीके से इसको याद कर लें. ceftriaxone एंड ceforexime, नहीं इन दोनों में ही कॉमन है ना, यही तो है ceforexime. So T और X, T and X, ceforexime and ceftriaxone, both can cross blood-brain barrier and both can be used for treatment of meningitis. Yes. So antibacterial spectrum, it has more gram negative coverage as compared to gram positive. ठीक है, gram positive का इसका कम होता जाएगा, अब gram negative का ज्यादा हो गया है, coverage हो गई है. And this group is effective against some resistant organisms and they are used against various beta lactamase producing microorganisms. ठीक है. You have seen here it is effective against beta lactamase producing Neisseria gonorrhea. It is effective against beta lactamase producing H influenza. जो second generation और first generation में नहीं था, ये difference है third generation में. कि third generation is effective against beta lactamase producing Neisseria gonorrhea and H influenza. It is also effective against Citrobacter and Providentia. ठीक है. ये प्रोटीएस, इकोलाई एंड क्लैप्सिला, ये तो आप आंखें बंद करके ना हर एक में लिख सकते हो, क्योंकि these are the basic microorganisms gram negative bacilli that is sensitive to almost all antibiotics. ठीक है, प्रोटीएस, मार्बेलस, इकोलाई एंड क्लैप्सिला. जो डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो आप याद रख सकते हो, जैसे सिट्रोबैक्टर है, प्रोविडेंशिया है, and ceftazidime is effective against Pseudomonas aeruginosa. ये Pseudomonas के against जो organisms हैं ये आपने याद रखने हैं. And ceftazidime and moxalactam, both of these are effective against bacteroid fragilis. अब ये चीजें आपने रट्टा लगानी है, ठीक है, ये चीज आपको वैसे याद नहीं हो सकती, इसको आपने लाजमी रट्टा लगाना है कि ceftazidime and moxalactam, they are effective against bacteroid fragilis, that is an anaerobic microorganism, and ceftazidime is effective against Pseudomonas.
No other drug is effective against Pseudomonas, and no other third generation is effective against Bacteroid fragilis. That's why it is written separately. जो जितनी बाकी जितनी drugs हैं, they cover all these things. ठीक है, they cover all these things. Third generation is used for empiric therapy for various infection. Even Cefroline from the second generation can also use for empiric therapy. So, and specifically cefotaxime and ceftriaxone is used for gonorrhea. आप देखोगे पीछे आप देखोगे तो cefotaxime and ceftriaxone is written, that is effective against beta lactamase producing Neisseria gonorrhea. So both of these drugs can be used for the treatment of gonorrhea. ठीक है, otherwise cefotaxime and ceftriaxone is used for meningitis, and बाकी जितनी भी इंडिकेशन है उसमें कोई भी ड्रग्स इस्तेमाल हो सकती है. Fourth generation has more broader and it is more resistant to hydrolyzed by beta lactamases as compared to third generation. ठीक है, इसका जो स्पेशली जनरेशन में जो है जो डिफरेंस है वो ये कि जैसे जैसे जनरेशन वाइज ड्रग्स बढ़ रही हैं वैसे उनकी सेंसिटिविटी या रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइज बाय बीटा लैक्टमेजेस जो है वो कम हो रहा है. Now these drugs are more effective against the beta lactamase producing microorganism. Fourth generation can also cross the blood brain barrier, so can be used in meningitis. It is effective against few gram positive and more gram negative microorganism. You have seen here Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus, Proteus, H. influenza, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas. Fourth generation and third generation में से एक ड्रग जो है it is effective against Pseudomonas. It is also effective against Neisseria gonorrhea. अब इसके जो है आपने जिस तरह हमने कल बनाए थे, आज टाइम कम था और टॉपिक जो हमारा एक्सटेंसिव था, इस वजह से हमने ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं किया कि अभी बनाएं बैठकर. आप लोग जिस तरह हमने कल बनाए थे mnemonics, you can make the mnemonics and you can easily remember these antibacterial spectrum. ठीक है, और आप उसको शेयर कर सकते हो, आप ग्रुप में बना सकते हो अपने. ठीक है, so fourth generation is more effective against the beta lactamase producing microorganism and effective against Pseudomonas and other gram negative positive microorganism. Fourth generation is reserved for the serious cases, severe condition that is not respondent to other drug. It is not a first line therapy. ठीक है, it is not a first line therapy. It is reserved for severe cases. Third one, Cefroline. It is fifth generation considered की जा रही है. It is approved for the treatment of skin and soft tissue infection. It is equally effective against gram positive, gram negative, and methicillin resistant staphylococcus. जो इसकी different बात है वो ये है कि it is effective against methicillin resistant staphylococcus और इसकी gram positive and gram negative coverage दोनों है जो कि बाकियों की नहीं है. ठीक है, gram first generation mainly effective against gram positive. Second generation has increased activity against gram negative but not against the resistant organism. The third generation है उसकी more activity against gram negative with increasing effectiveness against the beta lactamase producing microorganism और blood brain barrier को cross करना है. Fourth generation है वो भी resistant organisms के लिए है जो कि beta lactamase produce कर रहे हैं, Pseudomonas के लिए है and Bacteroid fragilis. And the last generation, fifth generation, is equally effective against both gram positive and gram negative. Along with the, its effect against the methicillin resistant staphylococcus. Adverse effects are mainly hypersensitivity reaction, but it has some specific adverse effect. Nausea, vomiting, diarrhea, आप लिख सकते हो, ठीक है? These are the few specific adverse effects. Some of these drugs can cause bleeding disorders or hypothrombinemia, especially cefoperazone, cefamandole. ठीक है, both of these drugs having a methyl thiotetrazole group in their structure. Methyl thiotetrazole group in their structure, and because of this group,
it may cause bleeding disorders or hypoprothrombinemia. So it should be used with caution in patients who have bleeding disorders or who are taking anticoagulants. ठीक है, इसका ये आपने एहतियात करनी है इसको, because cefoperazone and cefamendol both have methyl thiotetrazole group, and so it can cause these problems, bleeding disorders and hypoprothrombinemia. अब आपको पता है कि hypersensitivity reaction कर सकती है, pain at injection site, thrombophlebitis, GI problems, वो भी आप इसमें ऐड कर लो, ठीक है, सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है. तो आपकी जो स्पेसिफिक, अभी जो याद करने वाले आपके एडवर्स इफेक्ट हैं, these are 2, and it is asked कि अगर आपको cephalosporins के एडवर्स इफेक्ट कॉमनली cephalosporins के पूछे हैं तो आपने जरूर ये लिखना है, ठीक है. और अगर किसी ड्रग के पूछे हैं जैसे सेफ्ट्रैक्सोन है या जो है वो सेफालेक्सिन है, सेफेलोथीन है, तो उसमें आप ये नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज रिजर्व फॉर सेफोपेराजोन एंड सेफामेंडोल. सेकेंड इज अ डायसल्फ्यूरम लाइक इफेक्ट. सेफोपेराजोन एंड सेफामेंडोल both these are more toxic, and if it is used with alcohol then it may cause disulfiram like effect because it blocks the second step in the alcohol oxidation. और क्या होगा, it may accumulate the acetaldehyde in the body that causes the unpleasant effects. That is called the disulfiram like effect. Super infection, ठीक है. Interstitial nephritis and tubular necrosis का लिखा हुआ है, but it is not common, it is rare adverse effect. Clear हो गया. Now I'm not going in the detail of the small antibiotic. I want to show you some slides that has अब आपने कार्बीपेनम, मोनोबैक्टम, कार्बीपेनम, ये चीजें आप लोगों ने खुद देखनी है और इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको देखो. वैंकोमाइसिन है, ये इनकी क्लासिफिकेशन नहीं है. एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, दे आर रेजिस्टेंट, फ्यू रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट यूज होते हैं. जैसे वैंकोमाइसिन है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट यूज होती है, एजिट्रोनियम है ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट यूज होती है. तो इस तरह करके आप उसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम याद कर सकते हो. ये आप पिक्स ले सकते हो इसकी, क्योंकि ये मैंने भी नेट से ही देखी है. लेकिन ये देखो, ये इसका क्या है कि these are the specific agents that is only effective against gram positive microorganism. अब इसमें देख लो, टिकोप्लेनिन, वैंकोमाइसिन, फ्लुक्लोक्सासिन and daptomycin. They are purely effective against gram positive. They have no gram negative coverage. Similarly, azitronium and colistin, they are both effective against gram negative. They have no gram positive coverage. Anaerobic metronidazole is only effective against anaerobic. It is not effective against gram positive. It is not effective against gram negative. ये जो बीच में आ रहे हैं आप ये देखोगे, ये जो सेंटर वाला है, मीरोपेनम, टेगिसाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, पेप्रासाइक्लिन, टेजोबैक्टम, कोएमोक्सिक्लेव, they are effective against all gram positive, gram negative and anaerobic. अब आप ये देख रहे हो, ठीक है. It is effective against gram positive, gram negative and anaerobic, ये जितनी भी ड्रग है. While linezolid and clindamycin, they are effective against gram positive and anaerobic. ये देखो, इसको कवर कर रहे हैं ना, linezolid and clindamycin, they are effective against gram positive and anaerobic microorganism. ये दो ग्रुप्स को कर रहे हैं, while cephalosporins, aminoglycosides, fluoroquinolone and cotrimoxazole, they cover gram positive as well as gram negative and gram positive को cover कर रहा है. So it is a broader picture of all antibiotics through which you can easily understand the antibacterial spectrum. ठीक है, कुछ समझ में आया है स्लाइड का आपको? Is it clear to you? ठीक है. अब आप ये देखो ना कि आप इसकी पिक्चर ले लो. अगर आपने रैपिडली रिकॉल करना हो, आपको ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए, ग्राम नेगेटिव, और जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव है इन ड्रग्स को, वो, ठीक है. ये ब्रॉडली आप देख सकते हो कि कौन सी ड्रग ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट है, कौन सी ग्राम नेगेटिव है, कौन सी दोनों को कवर कर रही है. क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं. आप इन सब स्लाइड्स की पिक्स ले लो, ठीक है, ये मैंने नेट से ही ली है.
लेकिन इट शोज द ड्रग एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो भी ड्रग्स ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट है, कोएमॉक्सिक्लेव, ये सल्फोनम, ये जो है वो एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेविलोनिक एसिड, ठीक है, कोएमॉक्सिक्लेव। पिप्टा, पिप्टाजोबैक्टम, ertapenem, imipenem, these are the monobactam. Meropenem, these are the carbapenem, these are the carbapenems. So carbapenems are effective against gram positive and gram negative. Ceforezyme, cefotaxime, and ceftriaxone, these are from cephalosporins. All are effective against gram positive as well as gram negative. ठीक है, these drugs are effective against gram, also effective against gram anaerobic. Along with gram positive and gram negative, these drugs are also effective against anaerobics. और anaerobics कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर anaerobics के नाम पता है तो आप इसको क्लियरली इसमें लिख सकते हो, क्यों, ठीक है, ये सारी ड्रग्स हैं, आप इसकी पिक ले सकते हो। Then the drugs that is only effective against gram positive microorganism, it is vancomycin and ठीक है, teicoplanin, linezolid and daptomycin. These drugs are only effective against gram positive microorganisms. ठीक है, the drugs that only effective against gram negative microorganisms are ceftazidime, colistin and azithromycin. ये drugs सिर्फ gram negative की coverage करती हैं। तो मतलब इट इज अ इजी वे, या आपने रिपीटेडली डिफरेंट वेज से कोशिश करनी है याद करने की एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम और क्लासिफिकेशन। ऑल्दो बोथ आर वेरी डिफिकल्ट, ये याद करना वाकई मुश्किल है, लेकिन आपके लिए टास्क यही कि आप घर बैठे आप उसको लिख कर याद करें, आप उसको बोल कर याद करें, सुना के याद करें, निमोनिक से याद करें, ठीक है। एंड दीज ड्रग्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास, ठीक है। सुडोमोनास के अगेंस्ट कौन कौन सी ड्रग्स हैं? पेप्टाजोबैक्टम, सेफ्टाजिडीम, ये एमिपेनेम और मीरोपेनम फ्रॉम कार्बापेनम, gentamicin and amikacin from the aminoglycosides, and tobramycin is also from the aminoglycosides, ciprofloxacin and colistin and azithromycin. These are the drugs that are effective against pseudomonas. आप लोग पिक्स ले लो क्योंकि अभी आप उसको नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। So this is all about the cell wall synthesis inhibitor. You can ask if you have any question. There is no question. It will be easy for you. आप इसको याद करें या डिफिकल्ट होगा, कुछ आप लोगों ने गेन किया है इससे रिवीजन लेक्चर से, ठीक है। क्योंकि कोशिश मेनली आपको ही करनी है, पढ़ना आपको ही है। टीचर्स आपको गाइडलाइन दे सकता है लेकिन याद नहीं कर सकता वो सारी चीजें, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीजें हर चीज देखनी है। ओके, इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट वीक और आफ्टर नेक्स्ट वीक विद अदर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।